Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we have started unit number 3, and today I will give you a complete introduction of unit number 3, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. माय डियर स्टूडेंट्स, ताकि आपको पता चल जाए कि हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हम अटेन करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स गिवन ऑन पेज नंबर 27. बेसिकली ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये पेरेंट्स और टीचर्स के लिए हैं, ताकि वो ये अंडरस्टैंड कर लें कि बाय द एंड ऑफ दिस लेसन ऑल द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अटेन or describe and understand these objectives. So my dear students, let's quickly move forward. What we will learn in this unit, let's quickly have a look. If you keenly observe your environment, you will know how human beings are affecting it and making it polluted day by day. This unit will tell you about those human activities. You will also learn the importance of natural resources and how you can save them to save yourself. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो एनवायरनमेंट जिसमें हम रह रहे हैं, हम इससे बहुत कुछ ले रहे हैं और इन रिटर्न हम इसको बहुत कुछ दे भी रहे हैं. और कैसे हम इसको जो है हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं इसको पोल्यूट कर रही हैं और इसको डैमेज कर रही हैं, ये सब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, कैसे जो है हम इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं ताकि हम अपने आप को सेव कर सकें. ये तमाम चीज़ें जो हैं हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे. So my dear students, let's quickly move forward towards lecture number 1. जब हम lecture number 1 start करेंगे, the objective that will be attained is all the students will be able to describe ways in which humans have changed the natural environment. So my dear students, lecture number 1 में तमाम जो students हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये बता सकेंगे कैसे जो है human activities ने natural environment को बिल्कुल change कर दिया है. So the pages that will be included are page number 28 and page number 29. इसमें हम different जो है types of जो changes हैं environment के अंदर उनको भी discuss करेंगे. So my dear students, then we will move towards lecture number 2. So by the end of lecture 2, all the students will be able to define the term pollution, list different types of pollution like land, water, air and noise. So my dear students, lecture number 2 में आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप पोल्यूशन को डिफाइन कर सके. इसके अलावा आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जो है उनको भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे, उनको लिस्ट डाउन कर सकेंगे, जैसे कि वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन. सो द pages that will be included here are page number 29, page number 30. And then we will move forward towards lecture number 3. So by the end of lecture number 3, all the students will be able to suggest ways to save natural resources. They will also be able to predict that what would happen if natural resources were all used up. So my dear students, lecture number 3 में तमाम जो students हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये बता सकें कि natural resources जो हैं उनको क्या तरीका है, हम उनको बचा कैसे लें, क्योंकि वो limited होते हैं, तो उनको कैसे जो है हम सेव कर सकते हैं. और आप ये भी बताएंगे कि आप लोग ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि अगर हम तमाम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर लें और हमारे पास कोई नेचुरल रिसोर्स ना बचे तो फिर क्या होगा हमारे साथ. सो द पेजेस दैट विल बी इंक्लूडेड आर पेज नंबर 30 एंड पेज नंबर 31. And then we will move forward towards lecture number 4. So in lecture number 4, all the students will be able to identify the endangered animals of Pakistan like Indus dolphin, markhor and black bucks, etc. And they will also be able to suggest ways to protect the endangered animals. So my dear students, previous lectures में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे जो है हम human activities जो है वो एनवायरनमेंट को जो है वो पोल्यूट कर रही हैं, ख़राब कर रही हैं, और कैसे जो है हम लोग एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है ह्यूमन बीइंग्स ने उसके अंदर की है. सो उस डिस्ट्रक्शन की वजह से हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ और जो हमारे इर्द गिर्द एनिमल्स हैं उसको भी हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से दे हैव बिकम इंडेंजर्ड. सो हम डिफरेंट इंडेंजर्ड एनिमल्स जो पाकिस्तान में है, जिनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और जिनकी स्पीशीज़ जो है बहुत कम रह गई हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. और हम ये भी डिस्कस करेंगे, सजेस्ट करेंगे डिफरेंट वेज कि हम उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो द पेजेस दैट विल बी इंक्लूडेड आर पेज नंबर 31 and page number 32.
and then we will move forward towards lecture number 5. So in lecture number 5, all the students will be able to identify the extinct animals in Pakistan. So I'm really sorry, यहाँ पे जो SLO है वो थोड़ा सा wrong लिखा हुआ है, but all the students will be able to understand about the extinct animals, that what are extinct animals. So extinct animals ऐसे जानवर होते हैं जो कि अब दुनिया में नहीं रहे, तो हम उनके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है अगर आप इंडेंजर्ड एनिमल्स की ज़िंदगी को नहीं बचाएंगे, उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली दे विल फिनिश, जस्ट लाइक डायनासोर्स, टेस्मेनियन वुल्फ, डोडो बर्ड्स, इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो अब दुनिया में नहीं रहे. वी कैन जस्ट रिकग्नाइज देम बाय द पिक्चर्स, हम उनको जिंदा नहीं देख सकते. So these are called extinct animals, and then we will move forward towards lecture number 6. So in lecture number 6, a project will be included, और इस project में आप लोग जो है वो डिस्कस कर सकेंगे अबाउट डिफरेंट पोल्यूशंस जो है और कैसे जो है उनका जो है एडवर्स इफेक्ट हो रहा है हमारी लाइफ के ऊपर. And the last lecture is lecture number 7, and it will be a review of unit number 3, and I will give you a complete review of all the reading pages, all the concepts, and by the end of this lecture I will take an assessment to evaluate all the students कि आप लोगों ने इस unit से क्या क्या सीखा है. So my dear students, I hope you will thoroughly enjoy this unit, और हम लोग बहुत से activities करेंगे, projects करेंगे, और आप लोगों को learn करने को बहुत सी चीज़ें मिलेंगी. So we will start after this lecture number 1. Until then, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.